हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SkRepairTech। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है कुछ खास, क्योंकि हम लोग आपको डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं कीपैड फ़ोन या फीचर फ़ोन, तो उसका जो ईयरफोन जैक होता है वो अधिकतर ख़राब हो जाता है, छोड़ने पकड़ने लगता है, तो हमको उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हो जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा चैनल नया है, अभी ग्रो करने में समय लगेगा, तो आपकी हेल्प चाहिए बहुत। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहले इसे किसी चीज़ से हमें दबा लेना है, SMD का एयर चालू कर लेना है हीटिंग के साथ। अब इसे एकदम हल्के हाथों से ऊपर की तरफ खींचना है, अपने आप ऊपर आ जाएगा, हीटिंग सही हो जाएगा। तो वाह, देख लीजिए कितना आसानी से निकल गया। अब हमें इसमें नया जैक इंस्टॉल करना है, वो भी सोल्डरिंग आयरन की मदद से, क्योंकि हॉट गन की मदद से तो ये हमारा गल जाएगा जैक। एकदम किनारे प्रेस करिए पीछे की तरफ और इसको सोल्डरिंग आयरन ऐसे टच करिए, ये खुद ही अपने आप एकदम एडजस्ट कर लेगा।
अब हमें इन टाँकों को अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेना है रागा डाल के। ताकि हमारे टाँके अच्छी तरीके से फिक्स हो लें उसके लेग में।